इस रोड की खूबसूरत बात ये है कि इट हैज हेयरपिन्स एंड ब्यूटीफुल हेयरपिन्स. YouTube. So I just gave Ollie a bath. I took a shower. Now I was just packing up, just wrapping up. ये है तो अपने पास एक और बैग था जो मैंने गाड़ी में भेज दिया. Go to our bike and let's get up and get going. Hello friends, family and kiddos. This is your host and the host Vipin Ramachandran. So today we are diving into a beautiful, stunning world of Munnar, which is nested in Kerala, India's Western Ghats. So let's go experience this beautiful, breathtaking mountains covered with chai ki patti. एक चीज दिखाता हूँ. उनको కూడా ఆగరాక వెళ్ళకి మామా ఈ కొడావలి पे कॉल जाने गया यहाँ पे आइसक्रीम. अच्छा, लेटेस्ट अपडेट ये है, we just left Kottayam and we are heading towards Munnar, which is somewhere around 3 hours 58 minutes and 138 kilometers away. टाइम हो रहा है 4:56. इस रोड की खूबसूरत बात ये है कि इट हैज़ हेयरपिन्स एंड ब्यूटीफुल हेयरपिन्स. जस्ट थिंक अबाउट कि वादियों में आप गाड़ी चला रहे हो एंड यू हैव दिस कर्व्स, you know, free bikers dream road. Just trailer, more beautiful roads. चलो एक टी ब्रेक कर लेते हैं. चाय के बिना क्या ही जिंदगी मेरी जान. So after a beautiful strong chai, देख रहे हो यहाँ पूरा हेयर पिन्स है. लेट्स डू दिस. एक मस्त सा व्यू दिखा तो हैव टू स्टॉप द बाइक. मैं आपको भी दिखाता हूँ. तो अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा कोहरा है. एंड यू कैन सी द फॉग. बारिश होता है ना, दमदार वाली बारिश जो आ रही है डिस्टेंस में. पहले मैं निकल जाता हूँ, है ना, ये तो पंगा मुझे हो जाएगा. I'll see you guys. अस्सलाम. So day 2. तो I just woke up and कल मैं रात को vlog नहीं कर पाया. It was dark and थोड़ा रूम का सीन हो गया था. This is us and this is our messed up room. So मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. चलो. Good morning. I mean, we just had our breakfast. Just wanted to fuel up, so just अपनी जो कार अभी निकल रही है देखो. तो अभी fuel up हुआ है. अपनी गाड़ी को तो अभी नहीं चाहिए. The way to Kodaikanal. So there's another viewpoint. मेरा पूरा जूता कल भीग गया था. So it was raining heavily. And अपना जो the place which we booked, इसका कुछ सीन हो गया था. And so we had to take a room in Munnar. और हल्की सी ठंड है. बारिश का मौसम बना हुआ है. बारिश की आने की संभावना है. The mountains are calling. Just reached our viewpoint. But हाँ, मस्त तो है. इस ब्यूटीफुल लोकेशन को एंजॉय करने के बाद we started our journey for the next location, Cap Road.
गैप रोड में जितना सुना था मैंने उससे बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाते जाते इतनी शायरियाँ आई ना दिल में, कोई ना कभी वो भी सुनाएंगे आपको। और नाउ लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल एंड नेचरफुल रोड्स। तो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन था आनाकड़म, तो बीच में सोचा थोड़ा स्विट्जरलैंड भी घूम लेते हैं। लो थोड़ा आप भी घूम लो। स्टॉप 2 यार, ऐसे ही चलता रहे ना, जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे, पर बेस्ट पार्ट इज एंजॉय तो बहुत करेंगे। लेट मी शो यू। बरसात में गाड़ी चलाना अभी भी बहुत लोगों का ख्वाब है। ये ख्वाब का आनंद लेते हुए और अपने फोन को प्रोटेक्ट करते हुए हम चले अपने फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे। अभी बारिश हो रही है, यहाँ काले काले बादल, और यहाँ पे ये चिल किया जा रहा है। यहाँ पे there was a place called Janakya and the food was delicious and the pricing of the food, a wild guess करो कितना हो सकता है, well around 110 for 3 person।